Hello friends, welcome to Meera, Assistant Professor English from Government College चंदना जयराम। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। कल अपने BA सेकेंड ईयर की लिटरेरी हिस्ट्री प्री रोमांटिक पीरियड और रोमांटिक पीरियड के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे आपके सिलेबस में जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनके बारे में। ठीक है, अब देखिए आपके सिलेबस में लिटरेरी टर्म्स में पहली टर्म है ट्रेजेडी। देखिए ट्रेजेडी की डेफिनेशन देखिए। ट्रेजेडी ब्रांच ऑफ ड्रामा दैट ट्रीट्स इन ए सीरियस एंड डिग्निफाइड स्टाइल द sorrowful or terrible events encountered or caused by a heroic individual. By extension, the term may be applied to other literary works such as the novel. देखिए दोबारा देखिए इसकी डेफिनेशन। ट्रेजेडी ब्रांच ऑफ ड्रामा दैट ट्रीट्स इन ए सीरियस एंड डिग्निफाइड स्टाइल द sorrowful or terrible events encountered or caused by a heroic individual. By extension, the term may be applied to other literary works such as novel. ठीक है। देखिए दूसरी टर्म है आपके सिलेबस में आयरनी। तो देखिए आयरनी की डेफिनेशन देखिए। The use of words to convey meaning that is opposite of its literal meaning. The irony of our reply is how nice. When I said work all weekend. दोबारा देखिए इसकी डेफिनेशन। The use irony में होती है the use of word to convey meaning that is the opposite of its literal meaning. The irony of our reply how nice when I said I had to work all weekend. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टर्म्स। देखिए नेक्स्ट टर्म है सोलिलोक्वी। ए सोलिलोक्वी आर थॉट्स स्पोकन आउट loud without addressing another, a monologue addressed to oneself. Soliloquies are used as a device in drama to let a character make their thoughts known to the audience, address it directly or take it into their confidence. देखिए a soliloquy are thoughts spoken out loud without addressing another, a monologue addressed to oneself. Soliloquies are used as a device in drama to let a character make their thoughts known to the audience, address it directly or take it another into their confidence. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म है ब्लैंक वर्स। Blank verse is any verse comprised of unrhymed lines all in the same meter, usually in a pentameter. It was developed lately and became widely used during the Renaissance because it resembled classical unrhymed poetry. Lab whose syllabus unstressed. देखिए ब्लैंक वर्स इज एनी वर्स comprised of unrhymed lines all in the same meter, usually in pentameter. It was developed in Italy and became widely used during the Renaissance because it resembled classical unrhymed poetry. जैसे लैब के सिलेबस अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टर्म। चलिए कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ is the inclusion of a humorous character, scene, or witty dialogue in an otherwise serious work, often to relieve tension. देखिए कॉमिक रिलीफ डेफिनेशन। कॉमिक रिलीफ is the inclusion of humorous character,
सीन और बिट्टी डायलॉग इन एन अदरवाइज सीरियस वर्क ओपन टू रिलीव टेंशन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टर्म आपके नेक्स्ट टर्म में एलिजी। देखिए एलिजी डेफिनेशन देखिए, in English literature an elegy is a poem of serious reflection, usually a lament for the dead. However, for all of its pervasiveness, the elegy remains remarkable, ill-defined, sometimes vague. ठीक है, देखिए elegy is a poem of serious reflection, usually a lament for the dead. However, for all of its pervasiveness, the elegy remains remarkable and defined sometimes as। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके सिलेबस में नेक्स्ट टर्म है द मीटर। द मीटर इज द बेस यूनिट ऑफ लेंथ इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द एसआई यूनिट सिंबल इज द मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ द path traveled by light in a vacuum of a second। The meter is the phase unit of length in the international system of units। The SI unit symbol is the meter is defined as the length of the path traveled by light in a vacuum of a second। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपके सिलेबस से प्लॉट। In a literary work, film, story or other narrative, the plot is the sequence of events which each affects the next one through the principle of cause and effect। The causal events of a plot can be thought of as a series of events linked by the connector। देखिए डेफिनेशन देखिए, in literary work, film, story or other narrative, the plot is the sequence of events where each affects the next one through this principle of cause and effect। The causal events of the plot can be though thought of as a series of events linked by the connection। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए कैथारसिस। कैथारसिस इज द प्यूरिफिकेशन एंड purgation of emotions, particularly pity and fear, through art or any extreme change in emotion that result in renewal and restoration। देखिए कैथारसिस इज द प्यूरिफिकेशन एंड purgation of emotions, particularly pity and fear, through art or any extreme change in emotion that results in renewal and restoration। ठीक है, अब आपकी सिलेबस में जो 10-12 जो लिटरेरी टर्म्स थी वो आपने पढ़ लिए, आपको इन्हें लर्न करना है और आपका जो यूनिट लिटरेरी हिस्ट्री और लिटरेरी टर्म्स की थी वो फिनिश हो गई है।